ठीक है. Okay people, yesterday what we did was half of prepositions. ठीक है, आधा theoretical part मैंने कल डिस्कस किया और बाकी का हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो बचा हुआ है. And also the questions which are related to prepositions. ठीक. Now you just guide me, what was the last thing that we discussed? What was the last preposition that we discussed? हाँ, since okay, time वाला हमने कर लिया था. Okay, now you write down. अब इसमें एक आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन का. ट्रांसपोर्टेशन के लिए prepositions आपने कैसे यूज करने हैं? सी वी कैन हैव, अगर हम इन जनरल कहते हैं, इन जनरल कहेंगे तो बाय फॉलोड बाय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बाय फॉलोड बाय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये है इन जनरल. लेकिन ये ध्यान में रखना इसमें कि इसमें आपका आर्टिकल नहीं आना चाहिए. बाय के साथ कभी भी आ, एन और द नहीं आएगा. तो इसमें जनरली आप कुछ भी यूज कर सकते. सपोज आई से बाय एयर, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बाइक. यू कैन यूज एनीथिंग. सो विच वुड मीन, अगर मैं बाय बस कह रहा हूं तो बस इन जनरल, ट्रेन कह रहा हूं ट्रेन इन जनरल. ठीक है, और बाय द, बाय अ, बाय एन नहीं आता. नो आर्टिकल, यहां पर लिख लो, नो आर्टिकल टू बी यूज्ड. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, ये तब यूज करेंगे जब किसी भी तरह का कैटेगराइजेशन आप नहीं करते. किस तरह की ट्रेन, कौन सी बस, किस तरह की बस. सिर्फ आप बस कहते हो, ट्रेन कहते हो, कार कहते हो, बाइक कहते हो, एम्बुलेंस कहते हो तो बाय आएगा. लेकिन अगर आप कैटेगराइजेशन करो, यार ये वाली बस, ये नंबर की बस, ये ट्रेन, किसी भी तरह का कैटेगराइजेशन करो तब बाय नहीं आता. तो इन पर्टिकुलर यानी कैटेगराइजेशन करके पर्टिकुलर बना, पर्टिकुलर में आप ऑन यूज करोगे. अगर बस है, ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रक, शिप, बाइक, बाइसिकल, इन सब के साथ ऑन. और इन यूज करोगे आप अगर कार है, कैब, टैक्सी, लॉरी, एम्बुलेंस. तो ऐसे आपने ये ध्यान रखना है. मतलब कि अगर मैं कहूंगा he traveled by bus, he traveled by bus, तो ठीक है. but he traveled on 10 o'clock bus. He traveled on bus number 24. He traveled on a DTC bus. He traveled on a tourist bus. अब कैटेगराइजेशन होगी ना, तो ये सारा आपका ऑन के बाद आ सकता है. He traveled on 10 o'clock bus, on bus number 24, on a DTC bus, on a tourist bus. हाँ, इसके साथ आर्टिकल आता है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑन द पार्टिकुलराइज है, आ जनरलाइज है, इसमें दोनों आ सकते हैं. इन अ कार, इन माई कार, इन द कार, कुछ भी आ सकता है. आर यू गेटिंग? इन अ पर्टिकुलर कार. तो जब पर्टिकुलराइज करते हैं तो आपने ऑन लगाना है इधर. वैसे ही आई विल गो बाय कार, आई विल गो बाय कार, बाय कार. आई विल गो इन माय फ्रेंड्स कार,
I'll go in a Suzuki, a Maruti. I'll go in a Mercedes. Are you getting? I'll go in the owner's car. तो पर्टिकुलराइज कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हो इन ऐसे. We went by bike. We went on Yamaha. We went on Honda. Maybe all details plus maybe or plus waves. इन मतलब जैसे जनरली ऐसा है कि यू हैव टू क्लाइंब अप. बस में ऑन तो ऊपर, क्लाइंब अप. ट्रेन, एरोप्लेन ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है. इन मतलब यू हैव टू गो इन. कार में ऊपर नहीं चढ़ते. इन या कैब में, टैक्सी में, लॉरी में. तो इन एम्बुलेंस में देखो, एम्बुलेंस आजकल वैसे भी सीधी वाली भी है, बट ये जब बना है तो वैसे ही बना है. तो एम्बुलेंस के लिए इन ही यूज करेंगे, ऑन यूज नहीं करेंगे. The patient went in a JJ hospital ambulance. The patient went by ambulance. They took him by ambulance, but he went in a JJ hospital, a government hospital ambulance. यार पर्टिकुलराइजेशन आई तो इन. समझ आ रहा? जब पर्टिकुलराइजेशन करेंगे तो ऑन है. जनरलाइज अगर करेंगे, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, तब आपने क्या यूज करना? बाय यूज कर. ठीक है. और पैदल चलने को हमेशा ऑन फुट, कभी भी बाय फुट नहीं कहना. बाय फुट इज रॉन्ग. बाय फुट नहीं होता, बाय वॉक नहीं होता, बाय वॉकिंग नहीं होता. इट्स ओनली ऑन फुट. इट्स ओनली ऑन फुट. ये समझ आया कैसे यूज करना है? यहां पे आर्टिकल बिल्कुल नहीं, बाय के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता. इसके साथ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. इज दैट अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? नो इश्यूज विद दिस. सो दैट इज प्रेपोजिशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपने किस तरह से यूज करना है. ठीक है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन. ये लिख लिया सबने? डन. ओके. नेक्स्ट वन इज other prepositions. I name them as other prepositions. So what is the difference between among and between? Between is for two, among is for more than two. जैसे आप कहोगे this is between India and China, India and Pakistan, but among the Asian countries, among the SAARC nations. Please distribute the sweets among the students. So that means they are more than two. Got it? Next ones. What is the difference between beside and besides? Beside का मतलब है next to और by the side of. By the side of. और besides का मतलब है in addition to, या इसको कह सकते हैं apart from. Apart from या in addition to. दोनों ठीक. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. So जैसे he sat beside me in the class. मेरे बगल में बैठा. He sat beside me. तो beside. There is a McDonald's restaurant beside his house. मतलब बिल्कुल घर के बगल में there is a beside his house restaurant. अच्छा. Besides his colleagues, his friends were also present on the occasion. Besides his, in addition to his colleagues, his friends were also coming at the occasion. Besides. Yeah. Besides working for this company, he has also worked for many other MNCs. So, besides working for this company, यानी कि in addition to working for this company, he has also worked for many other MNCs. Are you getting? So, beside is by the side of, and besides is in addition to or apart from. That is beside and besides. फिर आया, what is the difference between by and with?
by is called source और agent. by source और agent, और इसको हम कह सकते हैं doer, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, doer, जो कुछ करे, काम जो करे, that is doer. And with is instrument और aid. इंस्ट्रूमेंट और एड जो इसका हेल्प करे. ठीक है. सो सपोज आई से he was attacked by a robber with a knife. ठीक है. by a robber with a knife. The robber is the doer and knife is the instrument that the robber used. Come in, come in. Good morning. By a robber with a knife. अरे इसके लिए हाँ वो हो गया. अगर पोजीशन आपने करनी तब भी वो दो के बीच की बात कर रहे, तब भी आप कहोगे एक और दो के बीच में, तब भी वो दो की ही बात कर रही. अरे गरी जैसे he stood between us, he stood in between us, in between या between us. एक आगे है एक पीछे, बीच में आके, बीच में आके, तो तब भी दो की बात हो. ठीक है. तो ऐसा है ना. या आप कहोगे the magical lock was opened by the wizard with his magic, or the wizard opened the magical lock with his magic. With क्या magic क्या है यहाँ पे? Instrument or aid. By the wizard with his magic. You can solve these sums with the help of this trigonometrical table. Trigonometrical table is the aid and you are the doer. The difficult sum was solved by the student with this chart, with the help of this chart. तो वो बना aid. Yeah. My friend was hit by an insane man with a stone. My friend was hit by an insane man. मैं अपने दोस्त को हर क्लास में हर था. Hi, my friend. ऐसा कोई कैसे हुआ नहीं ऐसा. It's just imaginary. My friend or my friend was hit by an insane man with a stone, or an insane man hit my friend with a stone. By insane man हो गया doer, with instrument हो गया. अब ऐसा हो सकता है क्या? My friend was hit by a stone. Can it be my friend was hit by a stone? कैसे? Sir, because सेंटेंस को पूरा करो. my friend, Was hit by a stone. आगे. my friend hit by a stone from Which fell from the cliff. Which fell from the cliff. किसी ने मारे नहीं, खुद ब खुद स्टोन गिरी उसके सर पे, किसी को लगी. So which fell. Are you getting? Did you understand that? और ऐसे नहीं कहते हैं thousands of people were killed by the deadly tsunami. अब सुनामी खुद में सोर्स भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है. By the deadly earthquake. By the volcano. Are you getting this? So volcano, tsunami, earthquake can be source and instrument both in the same. तो अबे by आएगा. So by with is understood. That is हाँ इस केस में विथ तो अलग अलग जगह पे आ सकता है. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस जो होते हैं. आप कहोगे आई ट्रैवल्ड विथ माय फ्रेंड. हाँ तो विथ हो गया उसके साथ. या हम कहेंगे ही पार्टनर्ड विथ समवन. पार्टनर्ड विथ समवन तो उसके साथ, मतलब उसके साथ रिलेशन लिंक, तो वैसे विथ आ सकता है. डन. नाउ नेक्स्ट वन. So what is the difference between
Made of and made from. Made of and made from. Chemical change. For long जरूरी नहीं केमिकल चेंज. अब मेरे को ये नहीं पता टेक्निकली क्या है, बट इंग्लिश के हिसाब से ये है. हो सकता है केमिकल चेंज साइंटिफिकली केमिकल चेंज हो, बट इंग्लिश के हिसाब से ये है कि मेड ऑफ हम कहते हैं वहां पे जहां पे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, उसका फॉर्म सेम रहे जैसा कि रॉ मटेरियल का फॉर्म है. रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट का फॉर्म सेम रहे. और मेड फ्रॉम होता है जहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट का फॉर्म डिफरेंट हो फ्रॉम द इनपुट और द रॉ मटेरियल. यानी ये बेंच है, ये डेस्क है, दिस इज मेड ऑफ वुड, बिकॉज ये अभी भी वुड फॉर्म है. जो पेड़ से वुड निकाला उसी फॉर्म में. सो दिस इज मेड ऑफ वुड. बट दिस पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, because paper is not in the wood form. So paper is made from wood, but this table desk is made of wood. है ना? अच्छा, आप कहोगे आइसक्रीम, बटर, cheese is made from milk because the shape, form changes, is made from milk. ठीक है? On the other hand, you will say uh, uh, this this gold jewelry is made of or this jewelry is made of gold. Gold still remains in the gold form as it is extracted. It doesn't change its form. Form, not shape. Shape तो change कर सकते हो. Shape तो कुछ भी बना दो. Form. So it is made of gold. Are you getting my point? So that is made of and made from. Then next one. What is the difference between die of and die from? Somebody died of some disease, something, and somebody died from something. Die of means primary cause of death. Die from means secondary cause of death. Suppose there was this man who died of heart attack. Somebody died of cardiac arrest. तो primary immediate cause क्या है? Heart attack or cardiac arrest. Died of heart attack or cardiac arrest. Now, for the same man, I can say that man died from obesity. Obesity or excessive fatness. Why? Because when fat gets accumulated in the arteries, so it can cause blockade, and that results in heart attack. So secondary cause is obesity and primary cause is heart attack. Some other man died of liver cirrhosis. Died of liver cirrhosis. For the same man, I can say that man died from excessive drinking. Excessive intake of alcohol damages the liver, results in liver cirrhosis. So primary and secondary cause. Okay. Next one. What is the difference between bound and bound for? Bound to and bound for. Bound to कहाँ पे यूज करते हैं पहले बताइए. बाउंड टू जुड़ना किस तरह से? बाउंड टू का मतलब है अंडर सम रेस्ट्रिक्शन और ऑब्लिगेशन. किसी ऑब्लिगेशन के अंडर हो आप, किसी रेस्ट्रिक्शन के अंडर हो, जिसकी वजह से आपके पास पूरी फ्रीडम नहीं रहती. दैट इज बाउंड टू. जैसे हम कहेंगे, अगर रेस्ट्रिक्शन की बात करें, सी दिस पर्सन cannot join your company at this time because at this time he is bound to his present company by a contract. He cannot leave his present company because he's bound to that company by a contract for so many years. So he's under obligation, under restriction, under bondage. One. दूसरे तरीके से, I cannot go against this person. I cannot speak against this person because I am bound to him.
He has been very kind to me in the past, so I am bound to him. मैं उसके एहसानों के तले हूँ. उसने मुझ पे काफी जेनरोसिटी दिखाई एहसान के, so मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता. I am bound to him. That's under obligation. Are you getting? It can be restriction, obligation, loss of freedom. Anyway, that is bound to. One. एक वो मीनिंग है. दूसरा मीनिंग है कंपल्सरली जो होना ही होना है. You are bound to miss your train because you are you are very late and train is about to leave. You are bound to miss your train. So compulsorily आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी. I think they are bound to reject this proposal. They are bound to reject this proposal. क्या मतलब कि ये मतलब पहले से आपने foregone conclusion लगाया कि यार ये प्रपोजल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कंपल्सरी रिजेक्ट ही करेंगे. तो बाउंड टू आल्सो मींस कंपल्सरी जो होना ही होना है. कंपल्सरी व्हाट हैज टू हैपन, और इट कैन बी अंडर somebody under obligation or restriction. Okay. Bound for is traveling. Traveling to a place. All the passengers bound for London should come to gate number 5. All the passengers bound for London should come to gate number 5. This train is bound for Delhi. That bus is bound for Chandigarh. Bound for is going to that place. Is that understood? Chaliye. Next one. What is the difference between agree with, agree to, or agree on? Agree with, agree to, and agree on. Okay, ये लंबा लिस्ट है. इसमें कुछ मेन मैं बताऊंगा, बाकी आप चेक करेंगे. You agree with a person. You agree with person's thinking. You agree with person's ideas. You agree with person's ideology. So you agree with someone, you agree with his thinking, you agree with his thoughts, with his ideas, with his ideology. तो with आया. But you agree to somebody's proposal. You agree to somebody's suggestion. So what one gives? You agree to somebody's proposal, somebody's suggestion. We agreed to his plans. Agreed with their plans, proposals, suggestions, plan of action, course of action. तो सबके साथ क्या आया? To. तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है, कहाँ पे विथ आएगा, कहाँ पे टू आएगा. इसमें डिफरेंस लगा दें. जो अग्री ऑन है, दिस इज सिंपल. अग्री ऑन होता है जनरल कंसेंसस और जनरल अग्रीमेंट. यानी कि जब सारे के सारे लोग या ग्रुप्स किसी बात पे पूरी तरह से सहमत हो, अग्री करे, अग्रीमेंट में हो, दैट इज कॉल्ड दे अग्री ऑन दैट इशू. ऐसे इंडिविजुअली उनकी डिफरेंसेस हों. लेट्स सपोज हम ऐसा कहेंगे, after the all party meet, all the political parties unanimously agreed on tackling terrorism with an iron fist. Means very firmly. Tackling terrorism with an iron fist, that means चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, जनता दल है, सीपीआई है, सीपीआई में सबका एक मत था. अदरवाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनमें. On this issue, they agreed on. Is it understood? हाँ, अभी तो बताया. लिखो. Hymns, person, person's thinking, person's ideas, person's ideology, person's thoughts. अच्छा, इतना तो मुझे याद है. और भी कुछ है जो मुझे याद नहीं. मैं बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है सारे. एक बार गूगल पे जाके देखना, और मतलब प्रॉपर सोर्स से, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर सोर्स से देखना. अग्री विथ और अग्री टू कहाँ पे डिफरेंशिएट करें. आधे तो मैंने बता दिया, आधे गूगल से सर्च करना. अग्री विथ और अग्री टू कहाँ पे डिफरेंशिएट करें. ठीक है, इसको लिख लो. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, दिस पार्ट इज डन, राइट. चलिए आगे. What is the difference between relationship to
and relationship with. What is the difference between relationship to and relationship with? When you say related to, relations to, relationship to, that is always either stating or defining the relation. Stating or defining. Relationship with is giving the quality of a relation. ये देता क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब है गुड है या बैड है, अच्छी है खराब है, इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है. वो अब देखो कैसे. I'll give an example. Do you know him? Do you know him? Yes, I am related to him. Stating, yes, I am related to him. How are you related to him? How are you related to him? I am related to him by blood. I am related to him through marriage. I am related to him by common ancestry. What is that? Relation to somebody is through blood, through marriage, through common ancestry. So you are defining that relationship. समझ आ रहा है? My relationship to him is because of this, by this, through this. ये अच्छा. I share a very congenial का मतलब क्या होता है? Friendly. I share a very congenial relationship with all my colleagues. He does not share a good relationship with his boss. India shares a very important relationship, or you can say shares a very important trade relationship with Russia. India's relationship with America is deteriorating because of the tariffs being imposed by America. So deteriorating. The quality of relationship is with. समझ आ रहा है? So to up with कैसे use कर. Okay. Next one. You can also say answerable for या answerable भी हो सकता है accountable. इस दोनों का मतलब है किसी की responsibility किसी चीज में किसी की responsibility. So accountable for or accountable to. Answerable for, answerable to. You are accountable for or answerable for something. But you are answerable to or accountable to someone. Something and someone. Are you getting? A democratic government is accountable for all its actions and policies. A democratic government is accountable or answerable for all its actions and policies to the people who elected it. And it's accountable to, it's answerable to the people who elected it. We are accountable for all our deeds and misdeeds to God. Accountable for something, accountable to something. To someone, sorry. Accountable to someone. ये समझ आ रहा है? Yeah? Accountable to होता है किसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी. जैसे हम कहते हैं he reports to him. जैसे my friend is working as a medium level employee and he reports to the manager, and for all his deeds, for all his actions, he's accountable to the manager because he reports to it. He's accountable to the manager and he's accountable for whatever he does. Accountable for something, but accountable to someone. Is that understood? Clear? So this is how you have to deal with
preposition collocation कि किसके साथ कौन सा आना चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए. जैसे आप कहोगे अभी मेरे गुड और बैड इन नहीं होता, गुड और बैड एट होता है, एक्सपर्ट इन होता है, इंसिस्ट ऑन होता है ना, रिलाई ऑन होता है ना, बार फ्रॉम होता है, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होता है. तो ये आपने इस तरह से देखना है. ठीक है. These are some of the basics that I gave you. Now we'll take up some questions based on prepositions. So just press this one. 1, 2, wait, 1, 2, 3, 4, and 5. Just check. How many are there? You got it? Everybody got it? ठीक है. Now here, you see the first, 30 questions are without options. ठीक है. और यहाँ पे errors will only be in prepositions या phrases जिसमें prepositions आते हैं. कोई phrase होगा, कोई idiom होगा जिसमें preposition आएगा, उसमें errors होंगे. prepositional errors ही है इसमें. तो हम बताएंगे कि और एक सेंटेंस में ये भी हो सकता है कि कोई एरर नहीं है, और ये भी हो सकता है कि 2 एरर है, 3 एरर है. जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एरर हो. सो वो आपने बताना है मुझे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद, विल डू वन क्वेश्चन एट अ टाइम. तो आप जैसे पढ़ेंगे और बताएंगे मुझे एरर कहाँ पे है और क्या है. सो सपोज वी गो विद द फर्स्ट वन. ही सेज students must have adequate command over the English language to be eligible for this job. So command over is wrong. अगर किसी सब्जेक्ट या लैंग्वेज की स्किल्स या एक्सपर्टीज की बात करें तो देन यू से कमांड ऑफ दैट लैंग्वेज और कमांड ऑफ दैट सब्जेक्ट, which means you have adequate skills or expertise. Command over या command on का मतलब है to have complete control or complete domination over something. जैसे I can say the army general has complete command over his unit, or he holds complete command on his unit. That means he's in total control, or he calls the shots. He calls the shots. He's in complete control of the situation, of the unit. So that is on. But off is to have required skills in a language or in a subject. Next one. बताइए. or with हाँ, एक्सपर्ट विथ नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए? एक्सपर्ट इन. अभी तो बोला मैंने, गुड और बैड एट समथिंग, बट यू आर एन एक्सपर्ट इन समथिंग. सो एस्किमो वुमन डिड नॉट बी बट वाज एक्सपर्ट के साथ हमेशा इन. अब जो पता लगा, एवरी सेंटेंस इज लर्निंग फॉर यू. आपको पता लगा ऐसे, नेक्स्ट टाइप आप मिस्टेक नहीं करोगे. सो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने उतने प्रीपोजिशंस क्लियर होंगे. जितना रीडिंग करोगे आप, जितना रीड करोगे, रीडिंग से क्लियर होगा. यू आर एक्सपर्ट इन समथिंग एंड यू आर गुड और बैड एट समथिंग. गुड और बैड एट, एक्सपर्ट इन. अच्छा, विथ सिन्यू थ्रेड, बाय मीन्स. ओके, ये फ्रेज है बाय मीन्स, इसमें प्रीपोजिशन यूज किया ऑफ. बाय मीन्स ऑफ होता है किस जरिए से, किस मीन्स से, किस जरिए से. बाय मीन्स ऑफ अ बॉडकिन. बॉडकिन समझते हैं आप? सिन्यू थ्रेड इज दैट थ्रेड विच इज यूज्ड फॉर, मतलब सिलाई के लिए. और बॉडकिन होती है, ऐसा होता है बॉडकिन, 2 बॉडकिन होते हैं. फिर जैसे स्वेटर हो बुनते हैं ना, तो ये टू नीडल्स, लॉन्ग नीडल्स, उनको बॉडकिन कहते हैं. दे आर कॉल्ड बॉडकिन. सो बाय मीन्स ऑफ अ बॉडकिन. ओके, बाय मीन्स ऑफ. चलो बताइए नेक्स्ट. सबसे पहले इंसिस्ट के साथ मैंने कितनी बार बताया? यू इंसिस्ट ऑन समथिंग. इंसिस्ट ऑन किसी पे जोर डालना, या इंसिस्ट ऑन होता है कि एडमेंट रहना किसी बात पे, यू नो, चेंज नहीं करना. आप मतलब किसी बात पे स्ट्रेस देना. दैट इज इंसिस्ट. ही इंसिस्टेड ऑन माय हैविंग टी विथ हिम. ही इंसिस्टेड ऑन माय हैविंग टी विथ हिम.
So on the creation of safe zones in Syria is a country. क्यों? सेफ जोन्स कंट्री के एरिया के अंदर क्रिएट करोगे ना, वो जोन है तो एरिया आएगा ना पिक्चर में, तो इन आएगा. Country is not treated like a point here. So in northern Syria is correct. Did you get that? चलिए नेक्स्ट वन, फोर्थ वन बताइए. यहाँ पे क्या आना चाहिए? दो है, इंडिया एंड चाइना, तो बिटवीन आएगा. वन इज द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना will hinge at the willingness. Hinge का मतलब है crucially depend on. Crucially. So जैसे depend के साथ आप on लगाते हो, वैसे हमेशा hinge के साथ on. अब पता लगा, next time mistake नहीं करोगे. ऐसे आपने इसको पढ़ना है. So will hinge on means crucially depend on the willingness of India as well as China to make concessions. ठीक है, चलिए next one. The project will be carried out in partnership with. You partner with someone. अभी मैंने बताया था पहले. हाँ, नहीं, ओके, आप मुझे ऐसा बताया करो, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या बताओ? किसको चेंज करना? वो नहीं. व्हाट इज द रिप्लेसमेंट? सो पार्टनरशिप विथ. सो यू पार्टनर विथ समवन. पार्टनर विथ समवन. चलिए नेक्स्ट वन. The modern bourgeois means rich class, industrialist class society has not done away by class antagonisms. Class antagonism is class hatred. अलग अलग classes में जो hatred है, hostility है, दुश्मनी है. But the phrase is, जैसे आपने कहा in place of, वैसे do away with. To do away with का मतलब है to end. To end or to finish something. खत्म कर देना, end करना. So yeah, we need to do away with the corruption in our society. So we need to eliminate, end. Are you getting? So यहाँ पे क्या आएगा? Has not done away with class antagonisms, but has established new conditions of oppression. Oppression क्या होता है? मतलब जुल्म करना, suppress करना, that is oppression. In place of replacement का in place of the old ones. चलिए सहमत? तो बाउंड फॉर लंदन आएगा, बाउंड टू नहीं आएगा, बाउंड फॉर लंदन. करेक्ट. नेक्स्ट वन. ड्यू टू, एक तो एरर और कोई एरर है. कार्ल मार्क्स says opined means given his opinion that class struggle arises due to means because of division of society into, कल बताया नहीं, division of whole into parts, classify, categorize. So division of society into classes having opposite interests. Is that clear? चलिए आगे. Yes, you measure something in the population. So scientists measured the amount of genetic variations in our population. See, you measure something in the population, but you conduct a test, a research on the population. A test is conducted on the population, but something is measured in the population. So you have to see where is the difference. So we measure variations in our population to make predictions about how genetic variation changes over time. Over time का मतलब है over a period of time. It can be with time also, but over time is correct. So we don't need to change it. Next one. And Typhoon Haiya, the strongest storm ever recorded on land. Storm can be recorded on land, on sea. That part is correct. Slam hota है with force. You slammed the door on my face with lot of force. Into the Philippines is correct. In late 2013 is correct. Slammed into is correct. Why? Into होता है when it
comes from outside one area to inside. Storm या साइक्लोन कहाँ पे, टाइफून कहाँ पे स्टार्ट होती है? समंदर में. समंदर के एरिया से कहाँ को आती है वो? लैंड फॉल करते, यानी कि लैंड के एरिया में. सो slammed into means it moved into Philippines with great force. Moving into some area with great force is slamming into that area. Are you getting? So slammed into is correct. The sentence is absolutely correct. There is no error in it. There is no error in it. Is that clear, everyone? चलिए बताइए next one. ऑफ बताया था, अवेल के साथ हमेशा ऑफ अवेल होता है, अपने लिए यूज करना. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना है. सो क्या आएगा? while I was at the airport, I availed myself of the Wi-Fi. I availed myself of the Wi-Fi. He availed himself of something. She availed herself of something. तो avail के साथ off. Next. क्या आएगा बताओ, सोचो. सिंपल है, ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम से आपको आंसर आएगा. इट्स नॉट डिफिकल्ट. ट्राई कीजिए. That? Yes, correct. See, you're getting all the answers correct. A large database of millions of patients with their health data spanning many years enables research on the, research on, test on the performance of the students, performance of our economy. So performance of medicines and medical devices, performance of medicines and medical devices. डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, या तो यूज कीजिए इन स्पाइट ऑफ, या तो सिर्फ डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, दोनों करेक्ट है. और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन में यूज कर. डिस्पाइट इज हार्ड वर्क, ही कुड नॉट सक्सीड. डिस्पाइट इज हार्ड वर्क, और इन स्पाइट ऑफ इज हार्ड वर्क, ही कुड नॉट सक्सीड. डिस्पाइट इज हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ इज हार्ड वर्क. नाउ डिस्पाइट strenuous efforts, या फिर in spite of strenuous efforts. Strenuous means very hectic, hard efforts. You know, efforts to ensure access to is correct. Safe drinking water. Progress in reaching the answer has been poor. Has been poor since 1990. So we're talking about 1990 to present day. From past to present, it's always since. Since. Next one. Very nice, very nice. Good, you know it. The phrase is in accordance to नहीं होता, in accordance with. In accordance with का मतलब है following, abiding, going with. जैसे हम कहेंगे you will have to work here in accordance with the laws of the company. The college teaches syllabus which is in accordance with that of the university. The syllabus is in accordance with that of the university. So which is following or same as that of the university. So in accordance with. Next one. In order to be happy and to get what you want in life, you need to be able to get along with others. To get along with somebody is to share a very friendly relation or good relationship with somebody. So you get along with someone, not through. Next one. The world's first G8 Dementia Summit was held in London. लंदन के एरिया के अंदर समिट हुआ. तो was held in London on 11th December. That is date. So that is correct. On 11th December 2030. So in London. Next one. Always IOR or के साथ हम यूज करते हैं to. Inferior to, superior to, senior to, junior to, prior to, anterior to, posterior to, सबके साथ to आता है. अच्छा, इसमें ये भी याद रखना, it's always preferable than नहीं होता, preferable to होता है. And
Suppose I say for him tea is more preferable to coffee is wrong. Preferable के साथ more या most use नहीं कर. Preferable already comparative है. Don't say more preferable, don't say most preferable, just say preferable to. I prefer tea to coffee. या I prefer tea over coffee. Prefer this to that, prefer this over that. तो इसके साथ to या over दोनों आ सकते हैं. समझ आ रहा है? जो मैं बता रहा हूँ tidbits वो भी लिखा करो. So that you remember it. ठीक है, let's go to the next one. So inferior to the foreign models. बताइए. है ना, mind body therapy such as yoga and meditation that cause interaction mind and body are two between the mind. Answer दीजिए. Answer. What I was saying is that among. So sit between mind and body, between the mind and body, and help the elderly to get rid of किसी चीज से छुटकारा पाना. Get rid of हो किसी चीज से छुटकारा पाना. निजात पाना, छुटकारा पाना, that is get rid of chronic pain. Chronic means continuous. Next one. Prime relation का मतलब है main, important, which is the quality of relationship, which is not defining. So, France's prime relationship is with Germany, while Germany's prime relationship is with the United States. अच्छा, countries के केस में एक और बात याद रखना, इसमें relationship लिखा है, countries के केस में हम लिखते हैं relations कई बार. India's relations with America. Relation नहीं कहेंगे, relations. You get my point? India's relations. याद रख, countries के केस. Next one. By dogma. Dogma means authoritative, diktat. Islam, Christianity, Buddhism and Jainism do not approve of. So it's always approve of or disapprove of. Approve of. Approve of का मतलब है अपनी consent देना या अपना support देना उस चीज के लिए या अपनी हाँ करना. That is to approve of something. Next one. सबसे पहले on account of. On account of का मतलब है because of. He did not attend the meeting on account of his ill health. He did not attend the meeting on account of his ill health. तो ill health मतलब के खराब health, because of his ill health. On account of the lack of space, it was decided to take up construction of 4-lane elevated road. That part is correct. Elevated means raised. Next. IOR, senior, junior, superior. So prior to industrialization, a broken machine had to be discarded because all its parts had been custom made. So prior to. Next. Cater के साथ हमेशा to आता है. Cater के साथ कभी भी with नहीं आता है. It's always cater to. Cater to का मतलब है to serve. Serve, cater to the needs, serve the needs. Or to service, to give service. Cater to can be to serve or to give service. So, in order to cater to the needs of our young population, we need to create at least 60,000 new schools within the next 5 years. Next one. Regardless. Regardless of का मतलब है it doesn't matter कि वो छोटे से छोटा पार्ट है या वो बड़े से बड़ा पार्ट है. That doesn't matter at all. So regardless of, correct. Addicted to. Your people get addicted to drugs. To drugs. Next. Bent on या पुराने इंग्लिश में कई बार अपॉन भी यूज करते थे पर जनरली आजकल आप सिर्फ बेंट ऑन यूज करते हो. सो बेंट ऑन का मतलब है कि किसी चीज पे ना अड़े रहना
और मतलब in a very negative sense it can be कि आप कोई चीज के पीछे पड़े हो, obsessed with something, वो आपको छोड़ नहीं रहे हो, and you are adamant and stubborn on something. जैसे he will not listen to you. He's bent on ruining his life. He's bent on. उसे पूरा इरादा कर लिया है. वो किसी की नहीं सुनेगी. Listens to nobody. So he's bent on ruining his life. That is bent on. Next. Right. Ah. You are proud of someone or something, but you take pride in something. A teacher is proud of his students, but a teacher takes pride in his students' successes. Teacher is proud of his students, but the teacher takes pride in his students' successes. You get the point? So that is to take pride in. On होता है. कहाँ पे कह रहे हो? कौन सा कह रहे हो? 28. नहीं, सबसे पहले India takes pride in taking steps to eliminate the menace. Menace means very harmful, something which is a nuisance and harming or poverty. एक तो आएगा depends on, relies on, depends on. और कोई error है? Italy's Alessandra Bazzana's future as a professional rider depends on whether Chris Homer decides to race along with Ergas Sefe at 2016. तो मैं पढ़ूं उसके बाद बोलो आप. अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या आएगा? in 2016. और कोई एरर दिख रहा है किसी को? चलो ये दो एरर तो सिंपल थे. किसी को क्या? along with है. along with Chris Homer decides to race along with Ergas Sefe. Okay, along with का मतलब है साथ साथ. अब देखो, I went to a hill station along with my friends. Along with वो मेरे साथ साथ थे. I was walking along with my sister in the garden. Along with my sister हो गया, वो मेरे साथ साथ वॉक कर रही थी. तो फिर Chris Homer decides to race along with Ergas Sefe. क्या Ergas Sefe एक और रेसर है जो क्रिस होमर के साथ साथ रेस करेगा? है ना? Which means ये बताना चाहता है Chris Homer represents a company called Ergas Sefe in the race. तो representation या इस रेस में वो इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए with यूज कर सकते हैं, along with नहीं. along with का मतलब है Ergas Sefe उसके साथ साथ रेस कर रही. कंपनी रेस थोड़ी कर सकती है. हाँ, Chris Homer decides to race along with other racers, along with somebody else, along with Mark Twain. So Chris Homer decides to race with Ergas Sefe. with मतलब उसको रिप्रेजेंट करना, along with मतलब उसके साथ साथ रेस करना. समझ आ रहा है डिफरेंस? तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एक आया डिपेंड्स ऑन, दूसरा आया with, race with, और तीसरा आया in 2060. Yeah, approve of. So disapprove of. Disapprove of. Correct. Next one. In lieu of means in exchange of. वो तो आएगा ही आएगा. But the origin of universe, the origin of life, with कैसे आएगा? तो you say the origins of. अब origins हो सकते हैं. Taxation system में है many origins. I'll not contest that. I'll not say just one origin. I'll say the origin of taxation. I'll say the origins of. Mistake कहाँ पे? With की जगह of. The origins of modern taxation can be traced to wealthy subjects paying money to their king in lieu of. In lieu of means in exchange of. King उनको military service देता है, वो king पैसा देते हैं. So in exchange of. Okay, now we have got fill in the blanks. So, अब यहाँ पे at, on या in. The telephone and the doorbell rang at the same time. Harish and Sarla always go out for a meal on their wedding anniversary, on that date.
on their wedding anniversary. Ramu is 58. He'll be retiring from his job in 2 years' time. I've been invited to a wedding on 15th August. Hurry up. We've got to go in 5 minutes. In 5 minutes. I'm busy just now, but I'll be with you in a moment. I'll be there with you in a moment. Ram's brother is a banker, but he's out of work at the moment, at this moment. I'll be there with you in a moment, but he is out of work at this moment. So the difference they'll समझ लीजिए. अच्छा, there are usually a lot of parties on New Year's Eve. This is one day before. Okay, I hope the weather will be nice on the weekend. On the weekend. We traveled. तो ध्यान रखिए, I'm seeing some mistakes are happening. Try to avoid those mistakes. We traveled overnight to London and arrived at 5 o'clock in the morning. The course begins on 27 June and ends sometimes in August. Correct. It was quite a short novel and easy to read. I read it in a day. He might not be at home on Tuesday morning. देखो in the morning होता है, लेकिन अगर आपने दिन बोला है तो उसके साथ on लगेगा. On Tuesday morning, but he'll probably be there in the afternoon, in the morning, in the afternoon. My Jeep is being repaired at the garage. It will be ready in 2 hours. Correct. Now, next one, you have to fill up these given. बताइए. The poor have to work from morning, from this to that, from morning to evening. I go for swimming every morning. Correct. Never laugh at. Laugh at means किसी का मजाक उड़ाना. Please wait for me. He fell in love with Sakshi. I got your parcel on Tuesday. She was married at an early age. His father died at the age of 63. They will go to Bangalore by plane. Correct. The man dash a beard. The man with. कई लोग इसको कहते हैं the man in a beard. In a beard नहीं होता, with a beard. Beard is extra. With a beard is my brother. I'm grateful. You're grateful to someone. You're grateful to my friends for their moral support. Gandhiji fought for the freedom of our country. This watch is a gift. आप लिखते नहीं हो कि नीचे नहीं लिखते? To someone from my uncle. This is a gift from my uncle. He spoke on the subject. You speak on the subject. You speak, ध्यान रखो इसका. You speak on the subject for 2 hours regularly. They will leave the place at exact time दिया at 10 p.m. Now again, she was punished for stealing a sari. The box belonged to the landlord. Correct. You must finish your project. You must finish your project till 5 o'clock positively. Children are fond of, you are fond of something, fond of chocolates. We get rains in July every year. His father died of primary cause. He's not popular among the students. She has great love for her children. Offer nahi aayega. You have love for your country, for someone. He was prevented from, barred from, banned from, prevented from, dissuaded from, discouraged from, or disqualified from. Listen to what your teachers say. Please beware of the dog. This book is a collection. यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिख लो of. This is a collection of Shakespeare's poems और poems आएगा. एक poem नहीं है, बहुत सारी poems होगी. Collection of Shakespeare's poems.